क्या हम हमेशा उसको कंक्रीट वर्ल्ड एग्जांपल्स से भी उसको मोटिवेट और कन्विंस करेंगे अपने स्टूडेंट्स को? और देयर इज अनदर वे वी कैन टीच स्टूडेंट्स कि किस तरह हम किसी चीज को साबित करने के लिए एक आर्गुमेंट का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं. दिस इज वन वे. अनदर वे इज टू प्रोवाइड देम कंक्रीट एग्जाम्पल्स. सो दिस इज एन ओपन क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन पर हम आगे बात करेंगे. तो मुझे इतना आई होप मैंने पहले ही बताया दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू टॉक अबाउट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट एनी लेवल बिकॉज डिफरेंट पर्सन्स मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस. तो मेरा ये कहना है कि वी शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बिकॉज आई हैव फाउंड स्टूडेंट्स आई टीच एट 12th लेवल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल पढ़ा था, लेकिन उसमें मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ आगे कि बच्चे कुछ चीज़ें लॉजिकली साबित नहीं कर पाते. दे ऑलवेज फेल टू डू इट. मेक देम अंडरस्टैंड अ सिंपल कॉन्सेप्ट, दे विल डू इट. Give them a problem and tell them, prove something, they will find it always hard. And the problem lies in our basic understanding or basic teaching of mathematics. So we should be teaching mathematics from 6th, 7th, 8th, I'll say. बच्चन को बार-बार टेस्ट कित पट आर्गुमेंट बिल्ड करा एक आर्गुमेंट पर कित पट बिग्स आर्गुमेंट तम से कित पट ब्याक आर्गुमेंट बना ताकि उनका वो बहस करने का तरीका टू रीच एट एन आर्गुमेंट दे विल बी स्ट्रांग. So they do not always rely on concrete examples. So because proving things with some given assumptions lies at the core of every mathematical theory, which I believe. We start a theory in mathematics, and if we try to achieve results in that theory, we have to do proofs. And unfortunately, in our curriculum in 12th class and 11th class, मैंने सबसे भी बात की थी मुख्तार साहब से भी, we lack some things. Like there is वहाँ पर हम ये नहीं देखते कि how to do proofs, so that we can equip them. The basic tenets of the proofs. So I'll be taking a sample problem. उस पर थोड़ा बात करेंगे क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम इस पर बात करेंगे हम एक प्रॉब्लम को ही उठाएंगे उसी में देखेंगे किस जगह क्या कर सकते हैं. So these are our goals: enhancing problem skills, promoting logical thinking, developing interest in mathematics, mathematizing students through the process, recognizing their chance to develop creative capabilities in mathematics. So let's take an example. Consider अभी हम इतना consider करेंगे जैसे आपने सामने बताया था we are students of 6th, 7th, 8th or 9th, 10th grade. Okay. So we are explaining number line to a child. We would start with a vague definition like हम इस तरह definition start करेंगे. A line is a geometrical figure which has no length, no breadth, no height. Because this definition is unresponsive as a problem because it has the terms like length, breadth, thickness जो बाद में फिर से explain करना है. And that will lead to again line define. That will be a circular argument. And that circular argument doesn't work. So हम कैसे लाइन बच्चे को सिखाएंगे? हमारा मकसद होगा इसके जहन में एक इमेज क्रिएट करना लाइन, so that he can visualize, imagine it. So we'll give him concrete examples. यहाँ पर concrete examples आ रहे हैं. So we can give him concrete examples like the wire ending and wire X stretched on the both sides endlessly, like a thread stretched on both sides endlessly, so that we can actually we are trying to make it image in his mind. So he gets it. Okay. Then we'll move forward. अब हम उसको लाइन सेगमेंट दिखाएंगे. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस लाइन. सो पॉइंट इज आल्सो पार्ट ऑफ. लेट्स नॉट गो टू दैट डिस्कशन. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. सो वी टेक टू लाइन सेगमेंट्स. इस पर हाउ द कोर्स कैन नोट लाइन सेगमेंट्स. दो रेशंस बच्चे यहां अख ये मत दोच क्या हम बदल लेंगे. दे सीम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. तो हम क्या करेंगे सीडी को उठा के एबी पर डालें. वी विल ट्राई टू इंपोज सीडी ऑन एबी सुपर इंपोज बट स्टिल सम पार्ट ऑफ द एबी विल लेफ्ट. दिस बाय से वाज तो पढ़ना. सो व्हाई डज दिस हैपन? Because point A and point B seem to be different from distant ज़्यादा दूर from each other as point C and D. Now how much A and B are far from each other? Let's agree to call it the length of line A. So to avoid that length initially, let's agree to call this the distance between the point C and D the length of line A. Okay? अगर हमने ये माना, so the bigger question is how do we measure the length? How do we measure the length? To compare these things, we have to measure how far the points are. So how do we measure length? So it's a very simple thing. Actually, ज़मीन पर तीन साल गाँव में उसका सांच ज़मीन पर का अगर तुम ज़मीन ऐसे हम सोच लॉरी खड़ा तुला तब ऐसे मियाँ दबा 5 साल हुए. That's again a measurement. 5 गज है. That's a measurement. So we'll select any length. Call that one unit. जो मैंने लिखा है वो नीचे वाली रेड बनाइए. Call that one unit. And let us see how many copies of these fit in our line segment. So you can see 5 copies fits in our line segment. So this AB is of 5 units, whatever unit it is, it can be meter. And the similar case, the CD is of 3 units. So now we can compare them. So we say AB is of 5 units, CD is of 3 units, so we can compare them. We can say AB is 2 units bigger than CD. So you understand this point? If you understand this point,